A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a very important chapter, that is a financial statement of sole proprietorship with adjustment. In this chapter, we discussed almost of various types of the adjustment. So in this video, we are talking about the practical problem which are related to the final account. So first of all, in this video, we solve the practical problem related to the trading profit and loss and balance sheet with a few adjustments, and thereafter we solve the practical problem related to the goods and service tax with on adjusted item like outstanding prepaid. Okay, so let's start the today's video. First of all, we take the practical problem from the book. Okay, so the question is, please listen carefully. Question number 2. From the following trial balance of Sri Manohar Lal prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2012 and the balance sheet as at that date. यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग you have to prepare the trading account, profit and loss account and the balance sheet. And the information are as follows. Purchase and sales 2,80,000, 6 lakh. Return inward 10,000. Return outward is 10,000. Carriage 11,000. Wages and salary 62,000. Trade expenses 3,000. Rent 12,000. Insurance 1,000. Audit fees 2,000. Debtors and creditors 1,50,000 and 50,000. Bills receivable 3,000. Payables 2,000. Printing and advertising 5,000. Commission 2,500. Opening stock is 30,000. Cash in hand is 10,000. Cash at bank is 20,000. Bank loan 11,500. Interest on loan is 1,000. Capital 1,10,000. Drawing 10,000. Fixed assets is 2 lakh, and the total of the trial balance is the 7,98,000 in the debit side and 7,98,000 in the credit side. If we are talking about the adjustment, so the adjustment number 1 are as follows. The stock at the end is rupees 65,000. It means the closing stock is 65,000. Depreciate fixed assets by 10%. Commission earned but not received amounting to 500. Rent received in advance is 1,500. Allow 8% interest on capital and charge 800 as an interest on drawing. So let's solve this question. First of all, we prepare the trading account with the given information. Okay, so let's prepare it. First of all, we prepare the format of the trading and profit and loss account combined. बिकॉज यू नो वेरी वेल, जब भी कोई क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को कहता है वो भी कंबाइंड, यानी दोनों ही चीज बनाने को कहता है. इट मींस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस. आपको जब भी फॉर्मेट बनाना चाहिए, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों कंबाइन ही बनाना चाहिए. सो वी राइट डाउन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012. Okay, and what is the format? You know very well, the format is particulars amount. क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसे लास्ट चैप्टर में बनाना सीखा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इन दिस चैप्टर वी प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, with the 5 adjustment are given in this question. So let's solve it. So first of all, you know very well, we write down the opening stock. So to opening stock according to the question is a opening stock will be a 30,000. Thereafter we write down the to purchase. So what is the amount of the purchase? It's 2,80,000 minus purchase return. This is also known as a return outward given in this question, that is a 10,000. So 2,80,000 में से 10,000 minus होगा, so it will be known as a 2,70,000. And all the direct expenses like a carriage is 11,000. And you know very well, in the credit side we write down the sales, and what is the amount of sales is 6 lakh minus sales return.
What is the amount of the sales return? Is 10,000. It is also known as a return inward. So the net sales value is 5,90,000. And you know very well, stock at the end, which is also known as the closing stock, will be right down in the credit side of the trading and profit and trading account. So closing stock according to the adjustment number 1 is 65,000. And thereafter we write down all the direct expense in the debit side of the trading account. So the first direct expense is the carriage, and second direct expense is the wages and salaries, 62,000. Wages and salaries are 62,000. And thereafter you know very well credit side total क्या, so total करने पे कितना आ रहा है 2 lakh, that is a 6,55,000, sorry for the mistake, 6,55,000 टोटल आ रहा है. एंड डेबिट साइड में भी कितना टोटल आना चाहिए 6,55,000, बट देयर इज अ बैलेंस, सो इस बैलेंस विल बी ट्रीटेड एज अ ग्रॉस प्रॉफिट. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज 2,82,000. And after that you know very well this gross profit will be transferred to the profit and loss account. ये trading account है. And जैसे ही हमें gross profit पता चल जाती है, we will move to the preparation of the gross profit, that is 2,82,000. And you know very well gross profit is 2,82,000. It will be transferred to the credit side of the net profit and loss account, 2,82,000. And the information are as follows, the additional information are as follows, which is also known as an adjustment. That is a depreciate fixed asset by 10%, commission earned but not received amounted to 500, rent received in advance 1,500, allow 8% interest on capital and charge 800 as an interest on drawing. Okay, so इन सबका एडजस्टमेंट अब पीएल अकाउंट में पड़ेगा एज वेल एज इन द बैलेंस शीट पड़ेगा. ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एक एडजस्टमेंट का सेट पड़ा, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक को कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट में एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द फर्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. So first of all we take the first indirect expense according to this question, that is the trade expense is 3,000. And thereafter we take the second indirect expense is an insurance. Okay, so the amount of the insurance is 1,000. The third one is the audit fees. Okay, so audit fees will be a 2,000. And printing expenses will be a 5,000. Printing expenses of 5,000. And the next information related to this is interest on loan. Okay, it is also given in the trial balance. So interest on loan is a 1,000. So you know very well कि ये पेज भर जाता है, तो you know very well we will shift the next page. This is my second page. So you know very well कि आप डेबिट के जहां भी आइटम्स आपके खत्म हो रहे हैं, यानी कि सपोज मान लो यहाँ प्रिंटिंग तक आपके पेजेस भर गए, so you will move to the next page. So we write down कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. इन द नेक्स्ट पेज you will create the line and thereafter start the next is interest on loan is a 1,000. So interest on loan will be a 1,000. And let's we move to the adjustment. According to the question, the first adjustment are given on the depreciate fixed assets. And you know very well जब भी हम depreciation लगाते हैं, so it will be write down in the debit side of the PL account. So fixed assets पे आपको depreciation लगाना है. कितना परसेंट लगाना है? 10%. What is the amount of the fixed assets? According to the question, the fixed asset value is 2 lakh. So 2 lakh का कितना परसेंट? 10%, 2,000. Okay, that is 2 lakh का 10%, 20,000. Next, second adjustment is commission earned but not received. So commission will be given in the credit side of the PL account. So the commission value will be according to the question is 2,500. Out of them 500 is an accrued commission, and you know very well accrued commission will be added to the respective income. Accrued commission को क्या करते हैं? Respective income में add कर देते हैं. So commission is 2,500, accrued commission is 500, so total commission will be 3,000. So इसका adjustment क्या पड़ेगा? Closing stock कहाँ जाएगा? एक जगह और asset side of the balance sheet,
Accrued commission will be shown in the asset side of the balance sheet, whereas the depreciation on the fixed asset, it will be deducted from the fixed asset. इसे डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम द फिक्स एसेट की वैल्यू में से, यानी 2 लाख फिक्स एसेट की थी तो 20,000 डेप्रिसिएशन लग गया, सो नाउ बैलेंस शीट में कितना शो करेंगे, ओनली 1,80,000. So this is the depreciation. Next adjustment is rent received in advance. So you know very well, according to this question आपको rent भी मिला था. Rent कितना मिला था? We received the rent according to the trial balance is 12,000. But out of them आपको advance rent मिला था. So advance rent will be deducted from the respective income. Advance rent is a 1,500. So 12,000 में से 1,500 will be deducted. So now 11, it will be a 10,500. Is that clear? Accrued को add करते हैं, advance या unaccrued को minus करते हैं. And the next is interest on capital allow करना है 8% से, और interest on drawing charge करना है 800 से. You know very well, interest on capital को be shown in the debit side of the PL account, whereas the interest on drawing को हम लोग क्या करते हैं, in the credit करते हैं in the credit side of the PL account. So according to the question is interest on capital कितना देना है, 8%. What is the amount of the capital according to the trial balance? Trial balance के according the amount of the capital is 1,10,000. So 1,10,000 multiplied by 8%. So 8,800 is the interest on capital according to the quotient, and interest on drawing value is given in the quotient, that is the 800. Okay. And after that you can see that हमने trading account का से gross profit निकालना. With the help of the gross profit we put all the indirect expense in the debit side of the PL account, as well as we write down the all 5 adjustment in the trading and the PL account. You can see that the first adjustment, the second adjustment, the third adjustment, the fourth adjustment, the 5th adjustment are as follows, because interest on capital and interest on drawing are given as an adjustment combinedly. दोनों ये साथ ही में दिया था, so total इस क्वेश्चन में 6 adjustment are there. So you can see that. Okay, so इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे. हाँ, लेकिन अभी आप ध्यान देखो कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या किया, कितने एडजस्टमेंट किए. फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. नंबर सेकंड एक्रूड कमीशन, उसको आप लोगों ने कहा शो किया, रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड कर दिया. नंबर थर्ड आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया फ्रॉम द, एंड एज वेल एज एडवांस रेंट. सो यू नो वेरी वेल, इन सारे एडजस्टमेंट का इफेक्ट बैलेंस शीट में भी पड़ेगा. हाउ? इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. Accrued commission will be shown in the asset side of the balance sheet. Depreciation will be shown in the, deducted from the respective assets. यानी उस assets में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा. IUC क्या होगा, कैपिटल में प्लस होगा, वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है. एंड एडवांस रेंट इज योर लाइबिलिटी. So you can see that ये सारे एडजस्टमेंट का इफेक्ट ट्रेडिंग या पीएल में पड़ चुका है. एक बार तो पड़ चुका है, एक बार और पढ़ना बाकी. ओके, सो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया, सो दैट व्हेन वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये कहीं ना कहीं हमारा हेल्प करेगा. ओके, सो सर क्या यहाँ सारे एडजस्टमेंट हो गए? यस. अब क्या करेंगे एट द एंड ऑफ द पीएल अकाउंट, सो जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट हम इसको भी बैलेंस करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा इट विल बी शोन इन द एज अ नेट प्रॉफिट. सो क्रेडिट साइड हम लोगों ने ऐड किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो द वैल्यू इज 2,96,300. डेबिट में कितना आना चाहिए, 2,96,300, एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी शोन एज द नेट प्रॉफिट, दैट इज 2,55,500 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2. We prepared the trading account and PL account and find out the gross profit 2,82,000 and 2,55,500 of the question number 2. Okay, इसकी बैलेंस शीट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे. ओके, सो लेट्स वी मूव टू द
practical problem related to the goods and service tax on the adjusted item. Okay, so let's we move. Suppose in any question in the trial balance there is following information are given. So this is the trial balance. Okay, in the trial balance the information are given as follows. That is, the first information is input CGST 15,000, input CGST 15,000, out input SGST also given 15,000, as well as the output CGST and output SGST are as follows. That is, output CGST is a 25,000 and output SGST is 25,000. Apart from this, rent rupees 40,000 is given. So it is a extracted trial balance. It means it is a incomplete trial balance is given in this question. बस आपको GST का adjustment यहाँ पे पूरी तरह से clear करना है. Okay. So these are the information: input CGST, input SGST, output CGST, output SGST, and rent. And the adjustment are given as follows. The adjustment are: rent is payable. Rent is payable rupees 4,000 per month. यानी रेंट हर महीने कितना आपको पे करना है? That is the 4,000 per month. As well as the additional information are also given. Outstanding rent is subject to levy CGST and SGST at the rate of 9% each. यानी रेंट हमें देना है 4,000 पर मंथ के हिसाब से, और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो सब्जेक्ट टू लेवी, यानी उस पर चार्ज होना चाहिए क्या? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितने परसेंट से? 9% से चार्ज होना चाहिए. So while we preparing the profit and loss account, when we prepare the financial statement of sole proprietorship, so इस क्वेश्चन का, इस एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन कैसे होगा? Because you know very well rent is a part of PL account and output CGST and output SGST हो, चाहे input CGST input SGST हो, all these are the part of the balance sheet. So उसमें हमें दो चीजें ही प्रिपेयर करनी है. Firstly the profit and loss account and number second is balance sheet of the sole proprietorship. तो मैंने दोनों का फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट कर दी. You know very well what is the format of PL account? That is particulars amount, and what is the amount of format of the balance sheet? That is liabilities and amount and assets and amount. Okay, so you can see that rent is 40,000. Rent अभी तक फर्म ने कितना पे किया है? That is 40,000. So firstly we write down the rent 40,000. Okay, and according to the information rent is payable at the rate of 4,000 per month. रेंट हमें कितना देना है? 4,000 रुपए महीना. तो 12 महीने का हमें कितना पे करना है? 48,000. Is that clear? यानी हमें रेंट कितना पे करना है? 48,000. How? 12,000, 4,000 multiplied by 12, that is 48,000. It means outstanding rent will be a 8,000. Is that clear? So outstanding rent आपका कितना होगा? 8,000. But you know very well outstanding rent पे क्या चार्ज होने वाला है? CGST and SGST. So what is the adjustment entry? मैंने आपको already बताया हुआ है कि क्या एंट्री होती है. Okay, so the entry of outstanding rent will be outstanding rent. Entry will be a rent account debit to outstanding rent. So what is the amount of rent? 8,000. Because of outstanding amount is 8,000, यानी पीएल अकाउंट में रेंट में कितना ऐड होगा? ओनली 8,000. एंड उस पे क्या लगने वाला है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. क्योंकि जब आप रेंट पे करोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी आप पे करोगे, और जब भी आप जीएसटी पे करते हो तो उसके आगे कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है? दैट इज इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? दैट इज 9%. दैट इज 720 and 720, and total value is 9,440. So your outstanding rent will be shown in the liability side of the balance sheet is 9,440. यही मैं समझाना चाह रहा था एडजस्टमेंट आइटम.
कि आपकी लाइबिलिटी होगी 9,440 रुपए की। तो देखा आपने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में क्या लिखा है, दैट इज 9,450 एज अ लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? And if you are talking about the CGST, SGST, output CGST, output SGST, so now you can see that your output CGST is greater than the input GST। जो आपका output CGST, SGST है और input CGST, SGST है, वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, यानी आउटपुट ज्यादा है, इनपुट कम है। सो जब आउटपुट ज्यादा होता है हम किस साइड लिखते हैं, इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत आराम से। पहले मैंने जितना आउटस्टैंडिंग रेंट का पार्ट था उसे हमने रेंट में ऐड कर दिया, दैट इज 48,000। कैसे? 8,000 की। कैसे है 8,000? 4,000 पर मंथ के हिसाब से देना था 48,000, बट हमने पे कितना किया 40,000, तो 8,000 हमें और पे करना चाहिए था, तो 48,000। बिकॉज यू नो वेरी वेल आउटस्टैंडिंग रेंट को हम लोग रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नंबर सेकंड इज, जब हमने ये एंट्री पास कर दी तो वी फाइंड आउट कि हमारी लाइबिलिटी कितने से भी इंक्रीज हो रही है, दैट इज 9,440। क्यों? क्योंकि आपको 8,000 रुपए रेंट देना है और जीएसटी का 720 एंड 720 टोटल मिलाकर देना है, यानी आपको कितना पूरा पे करना है जीएसटी, दैट इज 9,440 रुपीज आपको पे करना है। यहां तक कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अब आते हैं, इन सबको शो करना है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को हम कहां शो करते हैं, जिसका बैलेंस ज्यादा होता है। आउटपुट जीएसटी की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनपुट जीएसटी, सो आउटपुट जीएसटी विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट सी जीएसटी आपका कितना है, आउटपुट सी जीएसटी है आपका 25,000, और उसमें से माइनस करेंगे इनपुट सी जीएसटी, यू नो वेरी वेल। बट इनपुट सी जीएसटी पहले कितना था, 15,000, अब और कितना इंक्रीज हो गया, 720। यही मुझे आपको समझाना था। नाउ योर इनपुट सीजीएसटी विल बी 15,720। 15,000 पहले था, 720 अभी बढ़ गया ड्यू टू द आउटस्टैंडिंग रेंट। सो आप इसमें से माइनस कितना करोगे, 15,720 रुपीज आप डिडक्ट करोगे। सो योर आउटपुट सीजीएसटी आफ्टर एडजस्टिंग द इनपुट सीजीएसटी, दैट इज 9,280। okay, same as it is when we are talking about the output SGST, so you know very well output SGST भी कितना है 25,000, उसमें से भी जब आप माइनस करोगे इनपुट SGST, तो पहले इनपुट SGST कितना था 15,000, 720 आपका SGST भी बढ़ गया, सो 15,720 आप माइनस करोगे, नाउ आपका आउटपुट SGST होगा 9,280 रुपीज। आई होप इट इज क्लियर कि जितना आपका आउटस्टैंडिंग रेंट पे जीएसटी इंक्रीज होगा उतना ही आपके जीएसटी की वैल्यू इंक्रीज हो। ओके, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। लेट्स वी टेक द वन मोर एग्जांपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम। ओके, सपोज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने ये, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। लेट्स वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज अगर हम बात करें कि क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इनपुट सीजीएसटी 25,000, इनपुट एसजीएसटी 25,000, आउटपुट सीजीएसटी इज ऑफ 15,000, आउटपुट एसजीएसटी इज 15,000, एंड commission is not your income in this case, it is your expense, that is 10,000, and the adjustment are as follows। मैं आपको एडजस्टमेंट थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, ये तो आपने सॉल्यूशन देख लिया इसका। सपोज if we are talking about the commission is 10,000 and the adjustment are commission earned but not received rupees 2,000। क्वेश्चन में लिखा है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, ये कमीशन जो आपने अर्न तो कर लिया लेकिन आपको मिला नहीं, कितना नहीं मिला है, 2,000। ओके, which are subject to levy CGST and SGST at the rate of 8% each। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कमीशन आपने अर्न किया लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ, कितना, 2,000, विच आर सब्जेक्ट टू लेवी, जिस पे सीजीएसटी चार्ज होगा और एसजीएसटी चार्ज होगा, कितना परसेंट, 8% हर।
So in this situation, variable commission will be right down the credit side of the PL account because it is an income. So commission कितना है 10,000. उसमें कमीशन अर्नड है बट रिसीव नहीं है, इट इज एन एक्रूड कमीशन. ये किस तरह का कमीशन है? इट इज एन एक्रूड कमीशन. सो एक्रूड कमीशन कितना है आपका 2,000. सो द कमीशन क्रेडिटेड इन द पीएल अकाउंट दैट इज 12,000. इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? याद होगा आपको, मैंने बताया था इसकी भी जर्नल एंट्री इन केस ऑफ द एक्रूड कमीशन. एक्रूड कमीशन के केस में यू नो वेरी वेल द जर्नल एंट्री विल बी दैट इज accrued, that is commission account debit to accrued. Okay, journal entry will be accrued commission account debit to commission. और कमीशन कितने से इंक्रीज होगा? दैट इज 2,000. यू कैन सी दैट कमीशन को क्रेडिट किया 2,000 से, सो इट विल बी क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 and accrued commission will be a debited. So accrued commission आपका कितना होगा? Because you know very well, जब आपको ये कमीशन मिलेगा तो उस पे 8% जीएसटी भी चार्ज होगा. एंड यू नो वेरी वेल, जब भी जीएसटी रिसीव होता है इट विल बी टर्म्ड एज द आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी. ओके, सो वी क्रिएटेड द आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट SGST, that is 8%. 8% is 160 and total accrued commission will be 2,320. So the total accrued commission will be 2,320. So now when we prepare the balance sheet, क्योंकि PL account तो आपको दिख रहा है सामने कैसे बनाते हैं, कमीशन में हम लोग accrued commission को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. Okay, so that you know very well accrued commission is an asset because commission जो मिला नहीं है, कितना नहीं मिला है? 2,000. बट उस पर जीएसटी भी तो मिलने वाला है. कितना? 320. 160 एज आउटपुट सीजीएसटी, 164 एज आउटपुट एसजीएसटी. सो द accrued commission is 2,320. अब यहाँ बात करते हैं, हमने कमीशन का एडजस्टमेंट तो कर दिया, पीएल अकाउंट में भी कर दिया और बैलेंस शीट में भी कर दिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी कैसे करेंगे. तो यू नो वेरी वेल, इसमें ग्रेटर पार्ट किसका है? इससे पहले वाले एग्जांपल में ग्रेटर पार्ट आउटपुट का था, इसलिए हमने लायबिलिटी में शो किया था. बट इन दिस क्वेश्चन हमारा ग्रेटर पार्ट किसमें है? इनपुट से रिलेटेड है. सो इनपुट जीएसटी विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. इज दैट क्लियर? सो यू नो वेरी वेल, हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे इनपुट सी जीएसटी कितना है? 25,000. उसमें से माइनस करेंगे आउटपुट सीजीएसटी को. बट यू नो वेरी वेल, आउटपुट सीजीएसटी पहले था 15,000 रुपए, 15,000, बट उसमें इंक्रीज हो गया 160 रुपीज. तो हम लोग माइनस करेंगे 15,160 रुपीज. सेम एज इट इज आउटस्टैंडिंग केस की तरह से ही हम एक्रूड कमीशन में भी जीएसटी को इंप्लीमेंट करते हैं. उसी तरह से सेम एज इट इज इनपुट एसजीएसटी इज 25,000 एंड आउट ऑफ देम वी डिडक्ट आउटपुट सीजीएसटी बिकॉज एसेट्स में इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज आउट इनपुट की वैल्यू आउटपुट के कंपैरिजन से ज्यादा है. सो 15,000 प्लस 160, सो वी डिडक्ट 15,160. सो जो बैलेंस अमाउंट है इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. इज दैट क्लियर? सो यू कैन सी दैट द बैलेंस अमाउंट विल बी 9,840. 9,840. Okay, so these are the example by which we can easily understand the concept of goods and service tax on the adjustment item, how we will charge the GST on the outstanding expense and the accrued income, because you know very well prepaid expense and advance income पे तो GST charge ही नहीं होता at the time of the preparation of the financial statement of sole proprietorship. So when we prepare the PL account or balance sheet with the adjustment of the outstanding expense and accrued income including the GST, so in this situation सिर्फ आपका accrued income that is commission या outstanding expense जैसे रेंट में ही इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका इफेक्ट आपके जीएसटी के वाले पार्ट में पड़ता है जब आप सेट ऑफ करते हो आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से, आउटपुट एसजीएसटी को इनपुट एसजीएसटी से.
उसी तरह से सेम एज इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द IGST. Okay, so please note down all the example in your copy properly, because जब हम बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको काफी हेल्प करेंगे. Is that clear? So in this video we solve firstly a practical problem related to the preparation of trading and profit and loss with adjustment. In this question, we see the 5 major important adjustment like accrued commission, advance rent, interest on capital, interest on drawing, closing stock, as well as the depreciation on the fixed assets. And we can see that how we will show such kind of the adjustment in the financial statement of the sole proprietorship. As well as in this video, we also see that how we will show the GST on the specific adjustment item like outstanding expense, prepaid expense, accrued commission, accrued income, and advance income. So basically we find that कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे जीएसटी चार्ज होता है एंड एक्रूड इनकम पे जीएसटी चार्ज होता है. प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस इनकम के केस में जीएसटी विल नॉट चार्ज. Okay, so in the next video we will come to you with taken a new types of the practical problem related to the goods and service tax with the various types of the adjustment. Okay, आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and take care.